Why? ऐसा क्यों है? You know that? Because of our past conditioning. You know, when human beings were evolving, जब हम stone age में थे, we used to live in jungles. Human race as such used to live in jungle. There was threat of lion eating us, tiger eating us. तो वो थ्रेट से, तो हमारा पूरा एम था ह्यूमन रेस का टू सरवाइव, कि हम सरवाइव कर सके, बस सर्वाइवल वाज द मेन एम. फिर वो ऐसे करते करते यू नो सरवाइव हुए, फिर आगे बढ़े, फिर एवोल्यूशन हुआ, फिर मॉडर्नाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत एडवांसमेंट हुआ. उसके बाद नाउ वी आर इन 2022 एंड 2022 इज द टाइम टू थ्राइव, नॉट टू सर्वाइव. सर्वाइवल हो चुका है, हम लोग सर्वाइव कर गए हैं. Now is the time to survive, but what your mind is doing, your mind is conditioned to that stone age, that survival. Comfort zone. किसको अपना comfort zone अच्छा लगता है? यार सुबह उठना है 5 बजे, क्यों, मुझे और सोना था. You know, for my goals I have to take these steps, but I am in my comfort zone. यार कौन मेहनत करे, कौन ये स्टेप ले? Why should I do this? How many of you felt that resistance from your mind? पता है आपका माइंड क्या कर रहा था उस टाइम? जब भी आपका माइंड नो बोलता है ना, आपको ये नहीं करना है, मन नहीं कर रहा, आपको पता है ये इम्पोर्टेंट है, पर नहीं करने देता है माइंड. क्यों? क्योंकि वो आपको वहीं ले जा रहा है, सेफ. योर माइंड से, क्या तुमने ये कभी नहीं किया है, पता नहीं कर पाओगे कि नहीं, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है. आपका माइंड आपको ना प्रोटेक्ट कर रहा है, कंफर्ट जोन में लेके जा रहा है. So many of you can relate to this, right? So your mind's primary objective is to keep you safe. तभी आप आग के पास नहीं जाते हो, right? आपको पता है अगर हाथ उधर लगाया तो जल जाएंगे. आपको पता है एक एज है, इसके बियॉन्ड में अगर चली तो मैं गिर जाऊंगी, वहां पे खाई है. This is how your mind is doing its work fantastically well. Your mind is doing its work. आपको प्रोटेक्ट करना, आपको सिक्योरिटी, आपका सिक्योरिटी गार्ड है. But remember, your mind is also protecting you in the same way, reaching your desires. When it is time to thrive, your mind is only working in the survival mode. आपको survive करना है लाइफ में, कि आपको thrive करना है? क्या करना है? Can you write it down here? S for survival, T for thrive. क्योंकि अगर survive करना है तो survival आपका हो चुका है. अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना लाइफ में, आप survive तो कर ही लोगे. How many of you want to thrive? Yeah, the time is here for thriving, guys. Come on, okay? So emotion energy trigger ho gayi, mental energy is like protecting you. Now, how many of you have experienced that your mind is telling you something and your heart is telling you something? दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है. किसने एक्सपीरियंस किया ये? So many of us, right? You know why this happens? क्योंकि हमारी एनर्जी अलाइन नहीं है. ये दोनों एनर्जी जो है, इनमें अलाइनमेंट नहीं है, वो मिसअलाइंड है. एंड देयर आर फ्यू पीपल हु आर वेरी गुड इन अलाइनिंग दीज टू एनर्जी. यू नो हाउ टू अलाइन दीज एनर्जीज? इसको कैसे कुछ लोग बहुत अच्छे से अलाइन करते हैं, स्पेशली ऑल सक्सेसफुल पीपल यू सी. एब्सोल्युटली सुचित्रा, वेरी गुड. The way to align is smarty. Hemendran, you are amazing, lovely. That's how हम कर चुके हैं second day पे, by doing meditation, by being in silence every day, by practicing mind movie, doing their affirmations, reading, working on their body, journaling. All these things helps you to align these two energy. तभी आप देखो, आप जब साइलेंस में रहोगे, मेडिटेट करोगे और स्मार्टी रूटीन फॉलो करोगे, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगा, आपके डिसीजन मेकिंग पावर्स बढ़ेंगे, आप राइट चॉइसेस, यू विल मेक राइट चॉइसेस इन योर लाइफ. It is that powerful. So these things will help you in aligning, and few people are very good in aligning these two energy, but many of them fail to align their third energy, which is taking actions, aligning that physical energy. And the second inner shift will take care of that. जो हम second inner shift में बताने वाली हूँ, उससे that will take care of. So let's see in real, छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि GPS कैसे काम करता है.
So आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, एग्जाम्पल, यू नो, यू आर इन अ स्टेडियम, यू आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एंड यू आर इन फॉर टीम इंडिया, एंड लेट्स इमेजिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा है, लास्ट ओवर बचा है, लास्ट बॉल बची है, वी नीड 3 runs, एंड लेट्स इमेजिन उस टाइम सचिन तेंदुलकर खेल रहा है एंड ही हिट्स अ 6. Tell me guys, the crowd that are sitting there, the crowd that is sitting there, वो चुपचाप इंडिया की विन देखेगा, और द क्राउड विल बी जंपिंग विद एक्साइटमेंट, द क्राउड विल बी हगिंग ईच अदर. हैव यू सीन few people even running on the field, tearing their clothes off to celebrate the victory? You know how उनकी जो अंदर की इमोशंस थे, वो जो एनर्जी थी, वो ट्रिगर हो रही थी, that happiness, excitement, joy, वो बाहर आ रही थी in the form of actions. वो shout करना, hug करना, run करना, ये सब action थी. जो अंदर emotions हैं वो बाहर आ रहे हैं, it's converting into actions. When you see a cute child, a little child, a mischievous child, do you just watch that child when your emotions are triggered, or do you lean, do you hug your child or kiss that child? Even this is again GPS you're following, it is the emotions are coming out in form of actions, right? So अंदर already ये GPS है, हमें सिर्फ इसको properly follow करना है for our desires, to achieve our desires. So now if you've understood this GPS and you are going to follow, guys, type in the chat box GPS before I take you to the second shift. GPS, and there is an inbuilt GPS that you need to follow to achieve your goals. Alignment लेकर आना है और फिर action लेना है, right? Wow, so many of you. GPS, bring it on, lovely. Coming to the second inner shift is shut down your gremlin mindset. Gremlin क्या है? हम सब में ग्रेमलिन. ये वर्ड पता है सबसे ज्यादा कहाँ यूज किया जाता है? एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में. The aeroplane is, or engineers have made the aeroplanes almost ready to fly, but end moment पे एक mystical error आता है. That is very difficult to find, pinpoint करना. What is that mystical error which is not letting the aeroplane fly? उड़ने नहीं दे रहा. पता है वो mystical error, वो gremlin is in our mind also, जो हमें उड़ने नहीं दे रही. We all have gremlins in our mind that is not letting us fly, and we need to shut it down. So let's understand what is this gremlin mindset. You know, the gremlin is that little voice inside of your head that says no to you. No, don't speak to this person. No, don't talk to strangers. No, don't do this work. No, don't wake up at 5 a.m. वो एक resistance जो होता है ना, वो होता है. That little voice that says no to you is your gremlin. Now let's understand the characteristics of gremlin mindset. ये एक वायरस है, हमको इस वायरस का कैरेक्टरिस्टिक समझना है. जैसे कोरोना वायरस जब आया था तो वायरोलॉजिस्ट ने क्या किया? स्टडीड द वायरस, ये कैसे फैलता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तभी तो दे केम अप विद अ सॉल्यूशन कि मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग, राइट? इन द सेम वे we need to understand the characteristics of our gremlin mind. वो रेजिस्टेंस जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तभी हम सॉल्यूशन पे आ पाएंगे. नंबर 1, इट इज इनविजिबल. ये कहीं दिखता नहीं है, ये कहीं बाहर नहीं है. कहाँ है ये? इट लिव्स इनसाइड ऑफ यू. इट इज अनरीजनेबल. अनरीजनेबल मतलब आप उसको लॉजिक नहीं एक्सप्लेन कर सकते. आपके पास लॉजिक तो है कि मुझे 5 बजे उठना है, इट विल बी गुड फॉर माई बॉडी, इट विल बी गुड फॉर माई लाइफ, बट स्टिल वो लॉजिक नहीं समझ रहा है माइंड, राइट? दैट मीन्स लाइक व्हेन टाइगर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, can you explain logic to tiger that please don't eat me, I want to go sit at a comfortable place? You can't explain logic. All you have to do is run away from there, right? In the same way, आपका जो ये resistance है, आपका gremlin mind, आप इसको कभी कोई logic से explain नहीं कर सकते हो. Unreasonable है.
It never sleeps. How many of you have you recognize that your resistance is not sleeping while you were sleeping, but जैसे ही उठने की बारी आई आपका resistance आ गया. Don't wake up. आज सो जाते हैं थोड़ा सा और कल कर लेंगे, next week कर लेंगे. How many of you felt that resistance? यार 2 मिनट और सो जाओ, 1 घंटा और सो जाओ बस. है ना? वो रेजिस्टेंस नहीं सो रहा था, आप सो रहे थे, आपका रेजिस्टेंस जगा ही हुआ है. It never sleeps. It is clever. Clever, you know why? It's not saying yes to you. It's not saying no to you. It is saying कल कर लेंगे, परसों, बर्थडे से स्टार्ट करेंगे, January 2023. It is clever. Not saying yes to you, not saying no to you. But remember guys, this is the thing that is crushing your confidence. आप सब कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो ना, हमने कल कॉन्फिडेंस के बारे में पढ़ा था. But then this gremlin को भी टैकल करना आना चाहिए, because it's stopping you from being awesome. कितना ही कॉन्फिडेंस एक तरफ बढ़ा रहे हो, पर ये ग्रेमलिन को शट नहीं किया तो वो कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा, राइट? दिस इज अ कांस्टेंट चैटर इनसाइड यू. आपकी चैटर चलती रहती है, ओवर थिंकिंग, राइट? इट डाउट्स यू, मैनिपुलेट्स योर थॉट्स. लेट्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ग्रेमलिन माइंड. ये किस लैंग्वेज में हमसे बात कर रहा है? ऑल योर डाउट्स, your fears, your anxieties, your overthinking, procrastination, laziness, inconsistency is the language of gremlin mind. And you need to beat your enemy on a daily basis. Can you do this with your hands, guys? Let's do a physical movement. Beat your enemy on daily basis. How many of you are doing this with me? Tell me. Of course it is your enemy, it is stopping you from being awesome. But tell me guys, there is only one way to beat this enemy. एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है. क्या है वो? Only one way of beating this enemy. Any guesses, guys? Until you're very close. Lovely guys, you guys are quick learners. वाओ, सुपर ऑसम. जो लोग रिपीट कर रहे हैं ये सेशन, वो मत लिखना, हाँ प्लीज. एब्सोल्युटली, प्रियंका एंड लीना एंड ऑल ऑफ यू, राइट. द ओनली वे टू बीट दिस एनिमी इज टू टेक एक्शन नाउ. आपको एक्शन मोड में आना है. आपका ये जो आप कैसे कितने क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे करूं, इनकंसिस्टेंसी है, ये यही आंसर है इसका. बस एक्शन में आना है आपको. 3 तरीके से, यू कैन डू 3 ways you can take action, right? Number 1, start doing something that scares you. छोटा छोटा एक्शन लेना है, राइट? छोटा छोटा एक्शन लेना है, एकदम से बड़ा एक्शन नहीं लेना है हमको, क्योंकि हम अभी अपने माइंड को रिकंडीशनिंग कर रहे हैं. We are preparing our mind. We are on this battlefield. We are on this mission. You guys are commandos. हमें एकदम से मिशन पे नहीं जाना है, right? नहीं तो हम we will fall flat on our face. अभी हमको तैयारी करनी है. हमें वो मसल को डेवलप करना है. हमें एक दिन में 40 किलो नहीं उठाना. एक दिन में हमको डर लग रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग से डर लग रहा है तो सामने बोल दिया जाके 1000 लोगों के सामने. ऐसे नहीं होगा. You have to start small. And then eventually it will, आपको आदत हो जाएगी उस चीज की, फिर आपको सारी ये अनकंफर्टेबल चीजें कंफर्टेबल लगने लगेंगी. But you have to start small. So number 1 is, tell me guys, you know that for your goal something is important. ये steps मुझे लेनी है, so then only I'll achieve my goal. Good But morning, then what friends. is that step you are scared of? किससे आप डर रहे हो? For me it was public speaking, as I said yesterday. Driving car, okay, lovely. Swimming, it scares me. Went to dentist after 1 year, Parul, okay. Coding, coming in front of camera, Anshul, fear of judgment, fear of people, right? Fear of failure.
going out of India, okay? Laziness and failure. Fear of change. Yeah, that's a big one. Swimming, working. Speaking English, changing job, fear of judgment, fear of family, fear of rejection. Yeah, you know that this, I have to reach my goal. This is important, but this is what is scaring me. पता है आप एक्शन नहीं ले रहे हो ना, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है. You're not taking action. You're just fearing. All these fears, just overthinking. ये सब आपको stop कर रहे हैं. Now, because you are not used to taking action, you are not used to being uncomfortable. आप बहुत अपने comfort zone में रहना चाहते हो या रहे हो हमेशा से, तो आप है ना एक्शन लेने के लिए अनकंफर्टेबल हो रहे हो, इसीलिए आपको ये सब चीजें आप लिख रहे हो, आपको डर लग रहा है, बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू टेकिंग एक्शन. नाउ विद दिस सेशन यू विल बी एबल टू टेक एक्शन. नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैन यू टेल मी लास्ट 6 लेटर्स क्या है अट्रैक्शन के? लास्ट 6 लेटर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एज आई टोल्ड यू, लोग टेक्निक्स के पीछे भाग रहे हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भूल रहे हैं. एक्शन. Absolutely, law of attraction works beautifully with law of action. Karma जिसको कहते हैं हिंदी में, कर्म, taking actions, right? So आप now, for example, how many of you are fearful of talking to strangers? यार आपको ऐसा है, क्यों बात करो, मुझे नहीं करना है. You don't want to talk to strangers. You're uncomfortable. How many of you are like that? Right? How many of you don't want to ask for help? You don't ask for help. इससे अच्छा मैं ही कर लूंगी यार, मुझे नहीं पूछना. अब कहाँ पूछें, कहाँ किसको लगाए नंबर? I will figure. I will only do it on my own. You're not ready to ask for help. See, so many are there, right? तो आपको यही करना है आज. You scared of these things? Start doing, start making yourself uncomfortable, guys. Because I made myself uncomfortable, like I went for solo trip. It is very uncomfortable to spend time with your own self, figure out your own way. There are no friends. You have to ask for help. You have to spend time with yourself. You have to figure out. You have to eat your lunch alone, dinner alone. You have to make friends. This is very uncomfortable, but I did it. And मैं तो यूरोप चली गई अकेले, स्पेन, पाली, पोर्चुगल, कुछ दिन रही वहां पे, क्योंकि all these things are now helping me, because when you become successful you have to take lot of decisions, you have to do lot of uncomfortable things. लेकिन अगर आपको उसकी आदत नहीं है ना, तो that's why success is not coming to you, because universe also knows कि ये handle ही नहीं कर पाएगा, ये handle ही नहीं कर पाएगी, because ये कभी uncomfortable ही नहीं हो रहा है. Right? So you need to start asking for help, guys. Start talking to strangers. Like go to Starbucks. Practice करना है ना आपको. Starbucks जाओ, cafe coffee day जाओ. Start talking to stranger. You can just ask for, hey, can I borrow your pen? Where are you from? What? Something like that. Just make I know it will be very uncomfortable. You don't like to hear no, right? How many of you don't want to listen to no? अगर उसने मुझे reject कर दिया, मुझे no बोल दिया, तो है ना? So ये fear of rejection भी आपको stop कर रहा है. Be okay for a no. क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा no ही तो बोलेंगे ना. How many of you know that when you go to airport, आप अपनी टिकट्स बुक करते हो ऑनलाइन, आपको सीट चूज करनी पड़ती है ना, तो फ्री की कुछ सीट्स होती हैं, कुछ पेड सीट्स होती हैं. सो यू आर चूजिंग फ्री सीट्स, ग्रीन वाली जो होती है, राइट? बट डू यू नो दैट व्हेन यू गो टू एयरपोर्ट एंड व्हेन यू गो टू द काउंटर, वहां पे जो लोग एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स रहते हैं, इफ यू आस्क फॉर हेल्प, इफ यू आस्क दैट कैन यू अपग्रेड मी टू अ बेटर सीट, without any charge, they do it. If it is possible, if it is in their hand, they do it. But हम में से कुछ लोग पूछना ही नहीं चाहते, हेल्प ही नहीं लेना चाहते. You can get an aisle seat, you can get a window seat,
but you have to ask for help. Do you know when you go for a vacation, आप अपने hotels book करते हो online and all, but when you go there, जहाँ आप वहाँ, when you reach and when you ask them, when you become little friendly with them and you can ask them that can you upgrade my room from a basic room to a deluxe to a suite. They upgrade you without any cost, because customer service, customer क्या MBA में क्या सीखा था, customer delight is their main mission, their focus. As much as possible they will do it, but पूछ के तो देखो, people are not even ready to ask. कॉन्वर्स नहीं करना चाहते, स्ट्रेंजर से बात नहीं करना चाहते, अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो हाउ विल यू गो अहेड? दैट्स व्हाई दैट सक्सेस विल रन फार अवे व्हेन यू विल बी ओनली इन योर कंफर्ट जोन. ओके, सो नाउ ऑल, मैंने इतने सारे एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं. स्टार्ट डूइंग इट. हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू डू दिस, डूइंग समथिंग दैट स्केयर्स यू टुडे? स्टार्ट गेटिंग लिटिल अनकंफर्टेबल. ठंडे पानी से नहाने लग जाओ. कंफर्टेबल होता है ना गर्म पानी से, अपने आप को कैसे आप अनकंफर्टेबल छोटी छोटी चीजों में करोगे? स्टार्ट डूइंग दैट. I learned this from my father. My father takes cold bath and I was like, ये तो मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगी, because I was very scared of that thing. But then I told to myself, I'm scared, now I'm going to do it. And then I started doing it. उस टाइम जब मैं ये कर रही थी, when I, like you guys are learning, I was also learning. I started taking that. I started being uncomfortable there also. Okay? Wow, lovely guys, awesome. Next is commit 30 days to one action. ऐसी कौन सी action है जिसके लिए आप 30 days तक committed रहोगे? The word is action. It can be waking up at 5 a.m. It can be smarty, following that smarty कि at least 30 days तक तो मैं ये action लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ. How many of you are ready to commit one action? It can be I will write one blog a day. I will make one YouTube video a week. It can be anything. So what is that one action you're committing? Write down, guys, in the chat box. Waking up at 5 a.m. That will be lovely. Smarty, awesome. Following smarty and waking up. Wow, Varsha, that's amazing. I also wake up at 4:30. That's my time. Varsha, welcome to the 4:30 a.m. club. 5 a.m. walk, wake up early, reading book, waking up at 5 a.m. Nature walk, committing to nature walk. That's a very good way to increase your vibe, to increase your energies, to be with nature. That's lovely thing. Committing to 9:30 p.m. sleep, Reena, that's wonderful. Asha, waking up at 4. Lovely. In my 5 a.m. community मैंने 5 a.m. की बनाई है, but बहुत सारे लोग 4 बजे भी उठ रहे हैं उसमें से. बहुत बहुत massive changes आए उनकी life में, guys. I'm telling you, that's amazing, phenomenal. Go to library, aligning my mind with awareness. No sugar, lovely life skills. Bring it on, guys. All right, this is what you're committing. And third way to take action is apply, guys. Apply this rule at every step, which is 5-second rule, Mel Robbins action rule, which says that you want to come in action. You are procrastinating, you're lazy. Just tell in your mind 5, 4, 3, 2, 1 and take action. Exercise, for example, आप डर नहीं करना exercise, right? कितना आपका gremlin mind आपसे बात करता है, नहीं करना है, आज मन नहीं कर रहा है, मेरा भी करता है. What do? I apply 5, 4, 3, 2, 1 and I just take action. Is that I wear the shoes. One action is wearing a shoe. अगर आपने shoes पहन लिए, change और changing, कपड़े बदल लिए, तो आप exercise कर ही लोगे. नहीं भी मन कर रहा है ना, तो बोलो सिर्फ मैं कपड़े पहन रही हूँ, करूँ नहीं करूँ पता नहीं, सिर्फ मैं शूज पहन रही हूँ. देखना आप कैसे एक्सरसाइज करने वाले हो, वो ऐसा होगा ही नहीं कि आप नहीं करोगे. Come in one action, apply 5-second rule. I learned swimming, guys, because of this rule. Swimming के लिए I was scared of water, और वो भी ठंडा पानी. I was like, मुझे डूबने का डर है. I exactly did that. If I was scared of it, I did it.
I said 5, 4, 3, 2, 1, nothing. Every day my gremlin mind was talking, was stopping me. मत जा आज, क्लोरीन ज्यादा है, सी टैनिंग हो रही है, बाल खराब हो रहे हैं, कितने सारे एक्सक्यूजेस है ना हमारे पास. और बेस्ट एक्सक्यूज पता है क्या है? मन नहीं कर रहा है. I don't feel like doing it. How many of you have experienced that? I don't feel like doing it. Guys, understand, you will never feel like doing it. फीलिंग के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हुए तो वो तो कभी नहीं होने वाला है, फिर आप बैठे रह जाओगे. रिमूव योर इमोशंस. अपने इमोशंस को रिमूव कर दो वहां से. इमोशंस नहीं लाने हैं हमें एक्सरसाइज या कुछ नया सीखने के लिए. करना है तो करना है बस. जैसे हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, करना है वैसे ही मैंने स्विमिंग सीख ली. 14 days लगे मुझे, बट व्हेन आई लर्न इट वाज एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. I felt so good about myself. And when you feel good about yourself, you take many actions for different things. So start feeling good by taking 5, 4, 3, 2, 1 as an action rule. Okay? So, guys, if you have understood this and you are going to do something that scares you today, थोड़ा आप अपने आप को uncomfortable करोगे, you will commit to one action and you will apply 5-second rule, then type action in the chat box. That means you are going to take action on these 3 things. Action. 5, 4, 3, 2, 1 and wake up. Sleep के लिए तो ये सबसे अच्छा रूल काम करेगा. किसी ने लिखा है how to control sleep. This action will work. Okay. Awesome. And the third inner shift is invest in mentoring. Why? What is it? First of all, investing in getting yourself mentor. Invest in yourself getting a coach. But before that, invest in your own self. हमको अपने आप में invest करना है. How many of you here are hesitant to invest in their own self? That means आप अपने बच्चों के लिए कर लोगे, अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्ट कर दोगे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, बट जहां अपनी खुद की बारी आती है, you go back. Should I do? You will first do it for others, but for yourself, you are not a priority for yourself. How many of you are like that? Most of the times, not anymore. Okay. Me. Yeah, you're very good for others. So now the thing is, understand, guys. Until and unless your cup is full, you cannot pour anything out of an empty cup. Can you just everyone take your hands like this, अपने cup hold किया हुआ, and can you pour from an empty cup और उसमें कुछ नहीं है? Just make this sign. Just do this act. कुछ बाहर निकलेगा उस empty cup से? कुछ नहीं. कप तो पहले भरा हुआ होना चाहिए, तब तो कुछ pour कर पाओगे. So you want to be loving to your family, right? You want to provide for your family. You want to give your best to your family. But अगर आपका ही कप खाली, आप उनको क्या दोगे और किसी को भी क्या दे दोगे? So until and unless you invest in yourself, you grow, you learn, you make your thoughts better. How you will not, in fact, you will not be able to give your best to your family. In fact, आप जब empty cup से pour करोगे ना, आप खुद empty हो and you're trying to give, frustration energy will come, low vibration energy will come. In fact, अच्छे की जगह आप अच्छा करने जा रहे हो, पर वो अच्छा result ही नहीं मिलेगा. Okay? So invest in yourself. So guys, आप किन किन चीज़ों पे खर्चा करते हो? Let's see. You buy clothes. हाँ, आप clothes में invest करते हो. You buy jewelry. You buy shoes. अपने घर का सारा सामान. You buy so many things, right? आप invest करते हो. But understand, guys. First, कुछ दिन बाद ना ये सब चीज़ों पे आप खर्च कर रहे हो, clothes, jewelry, bag, you are running after them. But you know, the thing should be opposite. They should be proud that you are wearing them. Things should be proud that you are wearing them. You should not be proud that I am wearing a diamond set or I am carrying that bag. No.
They should be proud that I am on this person because this person is of so much value. This person has made herself or himself of that value. I'm so proud to be with this person. That should be your perspective. We run after brands. I want to own Versace. I want to own this brand. I want to own that brand. Guys, make yourself a person of that value that when you hold that brand or when you wear that brand, the brand's value will increase. Instead of you chasing that brand's value should increase because you are wearing them. No, that's how it is important to work on yourself, to invest on yourself, to become that person of value. And for that, you need to invest in getting yourself a mentor. Very, very important. Why? Let's understand this thing. A good mentor, a good coach will give you great ideas. You just need an idea, guys. You're just one idea away from your success, because one idea can change your entire life. One idea changed my life. Idea of waking up at 5 a.m., idea of bringing my offline program to online world at this time. It completely not only changed my life, it changed thousands of people's lives. I'll tell you one idea. One of the ladies, she came to me. She's in my 5 a.m. community. Her business was not growing. She was asking about it, and she was finding it difficult to scale, to grow. And she asked me this. उसने मुझे बताया, and I just gave her one very simple idea, very simple suggestion, and it was like a light bulb moment for her. She was like, शिल्पा, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? एंड शी वाज सो एक्साइटेड टू इम्प्लीमेंट इट. उन्होंने एक्शन लिया. वो 9 महीने बाद मेरे पास आई. 9 months later than 9 months she said that the baby is born. And I'm like, why, what happened? She's saying my baby is the 1 crore revenue that I was targeting, and that idea that I implemented in 9 months, that I am at that 1 crore revenue. क्या किसने चेंज की उसकी लाइफ? एक आइडिया ने. That's it, guys. So a good coach, a good mentor will give you great ideas. Next, a good coach, a good mentor knows the importance of taking action. So that coach will pull the best out of you and make sure that you act. Because we all need accountability. How many of you have understood that अगर कोई अकाउंटेबिलिटी होती है तो आप वो काम कंप्लीट करते हो? जस्ट लाइक एक्सरसाइज करना हो और आपने कोच को हायर किया है, वो रोज शाम को आपको मैसेज कर रहा है या बोल रहा है कि आओ इट्स टाइम फॉर यू एक्सरसाइज, तो आप करते हो. How many of you have felt that when accountability is there, you tend to do it, you tend to work out even if you want to miss, or your friend is standing downstairs और आपको पिंक कर रहा है, चल यार एक्सरसाइज करने चलते हैं. आप अकाउंटेबल हो ना, तो आप जाते हो ना. when somebody tells you, it is so powerful. In the same way, your coach, your mentor knows the importance of taking action and make sure you act. You are accountable to your coach. You know, सारे आप कितनी सेलिब्रिटीज देख लो, ऑल सक्सेसफुल पीपल, लाइक स्पोर्ट्स में आप देख लो, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, और सबके कोचेस हैं, सबके पास अपने अपने कोचेस हैं, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स. हमारा वो मोटिवेशन विल गो अप, गो डाउन, वो अप डाउन होते ही रहता है. वी नीड समवन टू पुश अस. We need someone to give us critical feedback that is important for your growth. आपको यस मैन बहुत मिलेंगे जो आपकी तारीफ करेंगे, जो आपको ऊपर यस यस यस. आपके फ्रेंड्स, फैमिली हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे. उनके एडवाइस भी ऐसे ही होंगे बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट यू, दे वांट टू हेल्प यू. But a coach or mentor will give you critical feedback also, which is necessary for your growth. That's why you should invest there. You should invest in coaching, mentoring, because a good coach will put together a powerful group of people all working towards similar goals. As I told you, I am here because of the community. People are very good. They have different resources. Somebody's किसी की क्या strength है, किसी की क्या strength है. You learn and grow together. You ask their questions, you get answers. क्योंकि आप जो फेस कर रहे हो उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस कर चुके होंगे, एंड दे गिव यू हेल्प.
Somebody is good in marketing, somebody is good in technology, somebody is good in sales, somebody is good in finance, taxation. क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है when we are on this path to grow, right? So a powerful mentor will give you a community, and we human beings thrive in community. We are social beings. हम अकेले में नहीं कर सकते कुछ. We are not that kind of person who can be doing things alone, like kind of humans. Okay. So how many of you now understood the importance of investing in getting a coach or mentor for yourself? Just raise your hand. Or you've understood, yes, you need idea. Yes, you need action. Yes, you need community. अकेले मत करना guys. कुछ भी कर रहे हो, a very good suggestion, a recommendation that if I can give is don't do anything alone. That journey will be very long. हो सकता है you will reach, but you will be tired, you will be exhausted, you will be all alone. 10 साल लग जाएंगे. वही सेम चीज आप शायद 1 साल में कर पाओ, वो 10 साल लग जाएंगे. Do it in when people are together, they bring in great results. Okay. Awesome, lovely. So आज के action steps क्या, आज के challenges क्या हैं? 3 challenges guys. Number 1, write down. Do something that scares you today. Either talk to a stranger, talk to your boss. आप जिससे भी hesitate कर रहे हो, करने के लिए बहुत दिन से सोच रहे हो, नहीं बोल रहे हो. Today do that. Okay, something that is uncomfortable for you. It can be even asking for help. It can be even asking or borrowing money. A lot of people don't want to ask for help or money कि वो no बोलेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे. If you need, of course, if you need, then only. Reading 10 pages of a book. Go read 10 pages of a self-help book, guys. No other, but a self-help book. When you read, please click the picture and share it in the WhatsApp group. कौन सी book पढ़ रहे हो आप? बट बेटर पता है उससे भी बेटर क्या है, अगर आप जो पढ़ रहे हो यू रियली लाइक्ड फ्यू 1 or 2 लाइंस, उसको हाईलाइट करो, क्लिक दैट पिक्चर एंड शेयर. सो मे बी यू नो वी विल रेज द वाइब्रेशन ऑफ द ग्रुप. पीपल विल लर्न फ्रॉम ईच अदर. एंड थर्ड, follow a diet plan today. A healthy food you want to eat of your own. Maybe you want to include salads, fruits, dry fruits, nuts in your diet today. Include जो आप बहुत दिन से सोच रहे हो, according to your own region, culture, your food habits. Eat healthy, no junk food today. Can we all do this cross mark together? Do it. To take action, do a cross mark. No junk food today. It's a challenge. It will toughen your mental muscles. आपको आज पता चल जाएगा कि आप कितना विल पावर स्ट्रॉन्ग है. चाहे आपका बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, अगर आज आपने कर लिया ये कंट्रोल, जब इट वाज मुश्किल, then still you did it, that means you are toughening your mental muscles. Okay. Woohoo, superb guys. आज का मतलब बहुत strong action food है. Action steps है, sorry, action food नहीं, action steps है आज के. I'm going to love it. Love seeing the energy in the group. Okay, now one thing from you that I need is, what has been your experience with the workshop so far? If I share the link in your WhatsApp group, is it okay for you to comment on your experience till now? Let me tell you, ये हमने recently introduce किया है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग ने हमें ये feedback दिया कि शिल्पा, अगर वो comments नहीं होते ना तो मैं आज इस प्रोग्राम में नहीं होती. Because a lot of people says that we don't trust the ads, और हमारा ध्यान ही नहीं जाता ads पे. But the thing is, somebody one of my senior commented, one of the ladies said that one of my senior commented on your post and I happened to see that. I trust her. Because of her, I am in this workshop, and because of her, she's now in my 5 a.m. community, and because of her, she is reunited with her husband. She manifested a relationship. They were almost on the verge of divorce. So guys, that is the power of your comment. आपके एक कमेंट से पता नहीं किसी की जिंदगी बदल सकती है. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपने अपने आप में क्या चेंज देखा है, whatever this workshop and however way it has helped you, will you be able to share in 2-3 lines, guys? If you're okay, please type okay, I will share the link. Let's help each other. Your comment, don't know who किसके काम आ जाए.
my duty. I'll do it. Lovely. Thank you in anticipation, guys. Thank you in advance. All those who will be giving their energies. I'm really, really from the bottom of my heart. Thank you for this. And tomorrow, guys, is a grand finale. We are going to bring it all together. We are going to do a perspective exercise. जैसे एक स्टोरी बताऊंगी मैं आपको, जिससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा आपकी खुद की लाइफ पे, और कैसे हमें ये इम्प्लीमेंट करना है फॉर लाइफ लॉन्ग, जो हमने ये सब सीखा है. Practical implementation tips I'm going to give you, and then I will be introducing you to the 5 a.m. community that your future self will thank you for. Okay, so all these things tomorrow. Thank you so much, guys. God bless you. This is it for today. I'll see you tomorrow now. And those who want to listen कि मैं public speaking में कैसे आई, जिससे मुझे बहुत डर लगता था, you can choose to stay here right now. 5 minutes, 2 minutes. I was literally scared of public speaking. Now you all know, right? And what happened is, in my whole school life, I was hiding behind tall girls. टॉल गर्ल्स के पीछे मैं छुपती थी कि टीचर मुझे ना पकड़ ले, मुझे ना बोल दे कि कुछ बोलने को, बिकॉज आई एम born and brought up in a मारवाड़ी फैमिली, हिंदी स्पीकिंग फैमिली. इंग्लिश नहीं आती थी किसी को, आज तक भी नहीं आती है. एंड आई वॉज इन दिस कॉन्वेंट स्कूल. आई हैड लो कॉन्फिडेंस, एब्सोल्युटली लो कॉन्फिडेंस ऑन माई इंग्लिश, कि मुझे ये नहीं लगता था कि मैं अपना हिंदी थॉट्स को कन्वर्ट कर पाऊंगी इंग्लिश में और बोल पाऊंगी. मुझे उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था. सो आई यूज टू हाइड. पूरी स्कूल लाइफ ऐसे ही निकल गई, मैंने नहीं बोला किसी के भी सामने. देन कॉलेज में मैं आई, मैं MBA करने बॉम्बे आ गई. यहाँ पे भी मेरे सारे फ्रेंड्स को ये पता था दैट शिल्पा इज नॉट गोइंग टू स्पीक. तो मुझे पता है वो लास्ट स्लाइड, जैसे हमारे ग्रुप प्रेजेंटेशंस होते थे और मुझे लास्ट स्लाइड मिलती थी जिसमें बोलना होता था थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर. इतना एक लाइन ही बोला मैंने, ऐसे मेरा MBA निकल गया, बिकॉज आई यूज्ड टू नॉट स्पीक. एज अ रिजल्ट मेरा कहीं पे भी कोई भी कंपनी आई, मुझे हायर नहीं किया, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक. मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों पे कॉन्फिडेंस नहीं था अपने. देन कमिंग टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया. मैं सारी मीटिंग्स में पता है क्या करती थी, आई यूज टू नॉट माई हेड लाइक दिस और लाइक दिस. आई यूज टू नॉट स्पीक बिकॉज आई यूज टू बी स्केर्ड ऑफ जजमेंट. आई यूज टू बी स्केर्ड कि लोग क्या बोलेंगे, मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ. ऑल ऑफ दीज थिंग्स केप्ट मी behind in my corporate world. But when I came here at the age of 38, when I changed my industry and came into life coaching, I told my mentor, can I do one-on-one coaching? I'm very good in one-on-one, but I can't speak in front of people. And he said, whatever you are scared of, do it now. जो मैं आज आपको कह रही हूँ. And then I started going on solo trip, making myself uncomfortable, all these things. मैंने छोटे छोटे रिस्क लिए, लोगों से बात करना स्टार्ट की. एंड देन जब वो टाइम आया, जब मुझे फर्स्ट अपना पब्लिक स्पीकिंग असाइनमेंट था मेरा, आई हैड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ 27 people. I was so scared. I was so nervous, guys. I wrote the whole script. मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी एंड मैं उसको रटने लग गई. मगिंग अप जिसको कहते हैं ना, I was mugging up because I did not want to come across as a person who can't speak well. So I was mugging. 15-20 pages थे, मैं उनको रट रही थी. And now the thing was, that day when that day came, और जब मुझे स्टेज पे जाना था, वो स्क्रिप्ट मेरे हाथ में थी. One of my colleagues took away the script from me and said, Shilpa, just go and speak. I was like, no, I won't be able to speak. मुझे स्क्रिप्ट वापस चाहिए. Because अगर मैं रेफर कर लूंगी, अगर मैं कुछ भूल गई. And she was like, no, go. What is scaring you? Go. I went on the stage, guys. जैसे ही मैंने माइक पकड़ा और मैंने गुड मॉर्निंग बोला, मैं जो मेरी स्क्रिप्ट में था मैं सब भूल गई. How many of you have noticed that when you look at people, at strangers, जो बोलना था वो भी भूल जाते हो आप, जो याद किया था वो भी भूल गए. I forgot everything what was written in those papers. And I had no option but to be vulnerable in front of others. I was being myself. And I had to be myself. I had option. I could have ran away. मैं भाग के जा सकती थी. Or I chose to face my fear. And because I chose to face my fear, 2 hours I spoke in front of people, just myself. जो मैं सोच रही थी जो राइट है,
मेरे हिसाब से वो मैं बोल रही थी. एंड गाइस, एंड ऑफ द that speech, first speech of my life in front of 27 people, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा. इट वॉज नॉट परफेक्ट. I stammered, I took pause, I forgot lines, but then because I completed it, it gave me a little, one iota of confidence. And from that day I started taking action. एक speech के बाद दो तीन, आज now I am more than 400 speeches ahead, and मेरा confidence with every speech बढ़ते गया. And that's what today you can see me as Shilpa, who is still not perfect. I'm not perfect, but I'm improving with every action steps that I'm taking. And that's why I wanted to share this with you, that don't be, you will be fearful, but still, in spite of your fears, take action. Fear तो होगा, fear जाने नहीं वाला है. Fear के को रख के actions लो. I am fearful, but in spite of fear, I am going to take action. Lovely. That was my sharing. I don't know who needed to hear this, किसको ये encouragement चाहिए था, but I thought I should share this. Showing up is half the battle won. Wow, amazing. Wow, so many of you saying I needed this, I needed this. Wow. Anshul, just 5, 4, 3, 2, 1 and go for it. एक खराब होगा स्पीच, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, बट आप एक्शंस लेते जाना, यू विल गेट बेटर. पता है, ऑल सक्सेसफुल पीपल से दिस ओनली. आप जितने भी लोगों की अगर बायोग्राफी पढ़ोगे, वो लोग कैसा है, वो सब ये स्टेज से जा चुके हैं जो आप फील कर रहे हो. सबको डर लगता था, सब कोई अंडर कॉन्फिडेंट थे, बट द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंस इज दे आर टेकिंग एक्शंस. एंड आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग यू टू टेक एक्शंस. Wow, Preeti, that's so awesome. She did public speaking after joining Rise and Shine. She did public speaking in just 1 week. That's so awesome. Lovely. Livia. I came out of the comfort zone and learned a new technology and cracked interview. But after joining, I was not able to perform due to lack of knowledge. Then I tried and started affirmations to come up, but it also didn't work. It affected my mental health. I lost my happiness. So now I quite that feel. Now I quit that field. I come out of the comfort zone and worked 6 months and cracked interview. This was my final result. So what is the relevance of coming out of the comfort zone? It led me to the fear of failure and depression. Oh my God. So Livia, the thing is, see what is this? The story that you are telling to yourself is, the thing is, you came out of your comfort zone, you also cracked interview, then you did affirmation, it didn't work. कितना ज्यादा आप नेगेटिव देख रहे हो अपने पैटर्न्स को, लेकिन आपने पॉजिटिव पैटर्न देखा है? इसी में पॉजिटिव पैटर्न भी निकल के आ रहा है. What is the positive that you can see out of this? I can see, so many of people here can see that the same situation can be with anyone, बट आपका जो नजरिया है देखने का, वो डिसाइड करता है आपका फेलियर, आपका सक्सेस. आप इसको फेलियर देख रहे हो, मैं तो इसमें इतनी सारी लर्निंग्स ढूंढ रही हूँ. कितनी लर्निंग्स है इसके अंदर जो आपने लिखा है. so many learnings, so many takeaways. You could have taken it as a feedback and move on. आप अभी बहुत शॉर्ट स्टोरी बता रहे हो मुझे, और इतने से में वी कैनॉट जज योर सिचुएशन लाइक दैट. बट if you tell this story, there has to be a positive side to it, definitely. But just in 3 lines only, you are only expressing negativity out of this. Okay, so this is not the way to see a situation. See out of this situation what positive you can bring it out. इसमें आप पॉजिटिव खोजो, क्योंकि आप what you are doing, you're feeding your mind with positivity. In these 5 days, in this, at waking up at 5 a.m., you are working on your mind power, your thoughts. Now Livia, I want you to see the situation from positive side. हर एक सिचुएशन को वापस लिखो और उसमें देखो इससे क्या पॉजिटिव निकल के आया. पॉजिटिव फॉर योर सेल्फ, पॉजिटिव फॉर अदर्स. Okay,
and reframe your story and tell the same story in a different way in WhatsApp group. I'll wait for it. Wow, that's so amazing. I spoke to my doctor very openly and confidently and set my routine. Your class helped me to plan my early morning 4 to 6, and it developed different confidence. Absolutely, because you're working on yourself, you are spending time with yourself. एक mind में calmness आती है तो अच्छे ideas आते हैं, अच्छे ideas आते हैं तो अच्छा feel करते हो, अच्छा feel करते हो तो अच्छे actions लेते हो, and that's why you will see so many positive results because of waking up early. Absolutely right. Awesome. Thank you, Bharti. I'm so glad you're enjoying these sessions. Siddesh, come on day 5 for Rise and Shine. Okay, I'll share it with you on day 5. I will introduce you to the amazing, powerful community of 5,000 people doing this together. Love yours, love this line, make yourself uncomfortable. Lovely. पारुल, इससे मुझे ना याद आ रहा है, मतलब अनकंफर्टेबल से, कि माय मदर इन लॉ, ओके, शी इज वेरी वेरी यूज्ड टू बीइंग कंफर्टेबल. हर चीज में शी इज ओनली लुकिंग फॉर कंफर्ट. that doesn't want to be uncomfortable in anything. As a result, अब मैं ग्रोथ की बात आपको जो बोलूँ ना, ग्रोथ कहाँ है जब आप अनकंफर्टेबल करो. Her life is same as it was, stagnant, same cribbing stories, same thing. She will go on and on, go on, because she doesn't want to get out of her comfort zone. Little, if there is something missing in the room which is not according to her comfort level, she gets tense, stress हो जाता है. इतना कंफर्ट लोगों को आदत हो गई है कंफर्ट की, आराम की, कि आप you are then stuck in your own emotions, own zone, and you're not getting out of it. So see this, you should also see the consequences of being comfortable always. इसकी consequences क्या है वो देखो, then automatically you will get that trigger to be uncomfortable, little uncomfortable, and one day when you'll be on that level, that pedestrian, when you have to face a lot of uncomfortable things, it will be very easy for you. Okay, lovely.